Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the platform Learn with Sharia. I'm your instructor, Shahryar Akbar, done with Masters in English Linguistics and Literature from National University of Modern Languages. In my very first virtual appearance before you, I'll be introducing you people to the English portion, specifically that portion which is coming in your MDCAT 2024. In today's class, I'll be talking about the weightage of this English portion. I'll be mentioning the course contents of this upcoming test, and more specifically, I'll be talking about the strategies, how to memorize these rules and regulations, and I'll be talking about the nature of the test as well. And nature of the test, I'll be letting you people know that what are those areas which are usually hit by the examiners. If I talk about the weightage of this course, it becomes 9% of your test. And 9% means 18 MCQs will come from the subject English. अगर 18 MCQs हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास 18 मार्क्स हैं. And mark my words, students, this English portion will differentiate you from the rest of the candidates. I personally believe that this portion will differentiate you from the rest. And if I talk about the course contents, first of all, we have parts of speech like noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, articles. अगर noun की बात करते हैं, I must let the students know that which are those areas which are hit by the examiners. तो noun में, based upon the complete detailed research of the past papers of this test conducted by PMDC, I finally reached to this conclusion that either the examiner goes for cases of a noun or he or she confuse you in the types of noun, specifically all the exceptional cases. Similarly, in pronoun, he or she either confuses you with the types of the pronoun or the order of the pronoun in a single sentence. If I talk about verb, the examiner goes for asking different kinds of verbs. If I talk about adjective, either the order of adjective is asked, पहले कौन सा आएगा, साइज के बारे में पहले बात होगी, ओपिनियन पहले लिखा जाएगा, ऑरिजिन के बारे में पहले बात की जाएगी. इसी तरह एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आपको in comparison of adjectives, in the degrees of adjective. Similarly, if I talk about adverb, the examiner goes either in the types or he or she goes for the order of the adverbs MCQs. If I talk about conjunctions, similarly, the specific types of conjunctions are used in different sorts of different versions of MCQs. Then preposition, which is a bit detailed topic and will be discussed in this series of lectures, but over here you are asked to either fill in the blank with the correct preposition or a sentence would be written and you will be asked to identify the error in that part. Maybe a wrong preposition is added. And then the next part is articles. You must know all those exceptional cases, you must know all those rules and points and places where the definite article the or the indefinite article a and n are used. The next category in this course contents is phrases and clauses. Phrase है तो कौन सा phrase है, but more specifically कौन सा phrase कहां पे कौन सा function कर रहा है. Remember, over here ये जितने भी course contents आपके सामने लिखे हैं, इससे पहले usually we were doing the students would usually do it with their common sense,
But over here, you will have to identify, you will have to know about the tricks to identify the different phrases and then the functions of the different phrases, because the function changes in different contexts as well. Similar is the case with the clauses. Then the next sentence topic, which is most important, sentence. Sentence से आपके पास बहुत ज़्यादा types के MCQs आते हैं, and they are usually either on the basis of structure. For example, structure के बारे में है तो कौन सा sentence है, simple है, compound है, complex है, compound complex है, कौन सा है. इसी तरह on the basis of meaning, on the basis of meaning, interrogative है, कौन सा sentence है, optative है, exclamatory है. So over here you are judged usually in these two parts, but in different versions. MCQs comes in different versions and those make you confused. But if you would be aware of the structures, if you would have practiced so many examples, and similarly, if you would be able to extract out the meaning of each sentence, and on the basis of that meaning, you would be able to identify the type of sentence, and you will have practiced MCQs on it, or you would have been through so many examples, so this part would become easy for you people as well. The next most important topic is conditionals. 2 to 3 MCQs are repeated in each and every year of this MDCAT exam, and the MCQs that are usually asked over here is to complete the sentence. 4 sentences are given to you people and you are asked to identify the correct sentence. So conditionals carry a rigid structure, and to let you people strong in those rigid structures, you need to practice over here as well. And there are practice exercises mentioned in your second year book specifically on these conditionals. The next topic is tenses. Structures of these tenses must be on your fingertips. How do we combine different types of tenses with one another? You must be aware of that technique as well. Then voices, and then narration. Then we have the most important topic written on the top of the board is punctuation. What do we mean by punctuation is, अब यहाँ पे वो सिंपल बात नहीं होगी कि ये कामा है, ये सेमी कॉलम है, ये कॉलन है, ये हाइफन है, ये डैश है, ये मार्क ऑफ, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, and this is question mark, and these are double inverted commas. No. Over here you will be asked about the function of this comma. अब तक जो आप लोग पेपर लेके टीचर्स के पास चले जाते थे कि सर एक कामा पे आपने क्यों मार्क्स काटे हैं, अब यही एक कामा अगर आप अपने एनएमडीकेट में गलत करेंगे तो रिमेंबर आपका 1 मार्क कट जाएगा, और अगर आपका 1 मार्क कट जाता है तो इट मींस you can lake in the final merit list. So you need to aware yourself with the uses and the functions of this single comma. You need to aware yourself with the different functions and uses of the semicolon, इसी तरह colon के, इसी तरह hyphen के, इसी तरह dash के, and इसी तरह ellipsis के, इसी तरह exclamatory mark के, question mark के, and double inverted commas के, कि वो कौन सी जगहें हैं जहां पे हम स्पेसिफिकली इन सारे पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करते हैं. स्पोकन लैंग्वेज इज डिफरेंट, but as far as the academic language is concerned, or as far as this MDCAT course contents are concerned, I told you people earlier that this is functional English, and in functional English rules are important. If rules are important, so you need to know about the rules and functions of these punctuation marks. The next important topic, which is usually not that repeated one, but you must know what is parallelism and what is redundancy. These two parts, I believe, are most important for that a specific type of MCQ. Spot the error.
जहां पे आपको वो कहता है कि एरर फाइंड आउट करें, वहां पे यूजुअली यही दो फिनोमेना जो है मैंने रिपीटेडली देखे। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज vocabulary. If I talk about vocabulary, and it is my personal belief that memorizing vocabulary is a kind of difficult task. And since this exam needs you to be good at this portion, vocabulary, अगर आपके पास strong vocabulary नहीं है तो MCQs आते हैं sentence completion, आप शायद वो ना कर सकें, because over there you will have to extract out, you will have to put in the blank the most suitable word that fit in that context. लेकिन इसके लिए you must be aware of the different vocabulary. So अगर किसी स्टूडेंट का ये वाला पोर्शन वीक जाता है, so I guess कि फिर उसका MDCAT के कुछ MCQs जो कि स्पेसिफिकली ऐसे आते हैं where vocabulary is highly needed, synonyms पूछे जा सकते हैं, antonyms पूछे जा सकते हैं, और simple आपसे पूछा जा सकता है कि what is the meaning of this word. And then the most important point of today's discussion is strategies to memorize these course contents. Dear students, before moving into discussing these strategies, I would like you people to know the difference in between hard work and smart work. अब आपसे कहा जाता है, हमसे हमारे बड़े भी कहते आ रहे हैं, और इसी तरह हम भी अपने जूनियर्स को यही कह रहे होते हैं कि हार्ड वर्क जो है that is the key to success. Well, I believe yes, it is the key to success, but one should know the strategies to do hard work, to put into that specific road map कि जहां पे आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको रोड मैप नहीं मालूम तो इसका मतलब कि आप लूज कर सकते हैं मार्क्स। अगर आपकी प्रेपरेशन नेचर ऑफ द टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, which I have discussed a little bit while discussing these course contents, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि एग्जामिनर आपसे इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से या इन बाकी टेंसेस, वॉइसेस, नरेशंस में से कहां से कौन से टाइप्स के एमसीक्यूज पूछता है, तो आपकी सारी की सारी जितनी भी मेहनत है which you call extreme hard work, वो वेस्ट हो सकती है। तो उसको वेस्ट होने से बचाने के लिए you need to do smart work, and smart work I believe is to know the nature of the test, कि एग्जामिनर कौन से टॉपिक में कौन से डिफरेंट वर्जन पे एमसीक्यूज पूछ रहा है। अब नेचर ऑफ द टेस्ट को मैंने यहां पे हाईलाइट किया और बार बार इस पे बात कर रहा हूं, एंड जितनी भी ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स होगी, you will be provided with the practice exercises after each and every topic, and over there I will make you people know what are those areas which are hit by the examiner. अगर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की बात की जाए, मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से आई कि एग्जामिनर एनएमडीकेट के एग्जाम में फॉर एग्जांपल प्रोनाउन में, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में ये जो एक्सेप्शनल केस है इसको वो छेड़ता रहता है, यहां पे वो यहां से वो एमसीक्यूज क्रिएट करता है। मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे पता चली? इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द रिसर्च दैट आई कंडक्टेड। आपके पास्ट पेपर्स आपको बताते हैं कि एग्जामिनर कौन से टॉपिक में कहां से एमसीक्यूज जनरेट करता है और किस किस वर्जन से। सो आपके स्टडी टेबल पे आपके जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। प्रैक्टिस एमसीक्यूज के जितने भी बुक्स हैं आपके स्टडी टेबल पे वो होनी चाहिए। स्ट्रेटजीज में सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यूजुअली स्टूडेंट्स डोंट गो फॉर, दैट इज टेक्स्ट बुक रीडिंग। Remember students, I call it prerequisite for this MDCAT, and I call it compulsory and mandatory for your MDCAT exam.
all you think and hanker is blank government service. Yes, I have uttered the same line asked in the MDCAT 2023, and it was not from anywhere else but from the responsibilities of youth. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ का जो चैप्टर है आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स का, वहां से इसी तरह जो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज मेंशन है सेंटेंस के ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपके सेकंड ईयर के बुक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज पेज नंबर 102, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई गेस इट इज वन पेज 102, वहां पे बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस उस पे काफी सारे एग्जांपल्स हैं. तो नेक्स्ट जो एमसीक्यू था वो वहीं से उठाया गया था. इफ यू लुक एट द vocabulary portion, that was the same word taken from your second year textbook. So textbook reading I personally believe that it is compulsory, it is mandatory for a candidate of an MDCAT exam. लेकिन textbook reading किस तरह करें? Memorization. The second point automatically leads to this. कोई भी टीचर लेक्चर डिलीवर करते हुए आपको एट अ टाइम 2 एग्जाम्पल्स दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे देगा, 5 दे सकता है और 10 कंसिडर कर ले इसको. बट आई बिलीव नो टीचर वुड हैव दिस मच टाइम. और इन सारे पॉइंट्स को आपने मेमोराइज करना है तो आपको लाजमी है, आपको चाहिए. एक ट्रिक बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव कवर्ड दिस पोर्शन नाउन, केसेस ऑफ अ नाउन एंड देन टाइप्स ऑफ नाउन. ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑफ योर फर्स्ट ईयर कोर्स. जो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं उसमें से आप स्पेसिफिकली बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके केसेस ऑफ नाउन अगर आपके पास डिफरेंट आते हैं तो वो अपने पास हाईलाइट करें. अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन रिपीटिशन में आते हैं उनको हाईलाइट करें. इसी तरह जब आप प्रोनाउन को कवर कर लें सो गो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं आपके टेक्स्ट बुक के, उनमें से आप प्रोनाउन के टाइप्स ढूंढें एंड सिमिलरली सर्च फॉर द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस एज वेल. इसी तरह सेम प्रोसेस वर्ब in the next 2 chapters, adjective in the next 2, adverb in the next 2. जब तक आप अपने कोर्स के इस पॉइंट तक पहुंचेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा about all the examples and about all the functions that different parts of speech carries, or these punctuation marks carries, or how does the writer write in different structures based upon the meaning or based upon the structures. You would come to know about the different structures and so many examples of the conditionals. You will be able to identify the combination of tenses if you will have read your textbooks thoroughly. आपके दोनों टेक्स्ट बुक्स भी कवर हो जाएंगे और आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने से एग्जांपल्स के फॉर्म में गुजर जाएंगे. सो यू विल बी एबल टू रिकॉल एंड यू विल बी एबल टू मेमोराइज ऑल दोज पॉइंट्स. एंड देन द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. As far as these series of lectures are concerned, there will be practice exercises by the end of each and every topic that is delivered over here. But आप अपने सामने प्रैक्टिस के लिए कोई भी MCQs की बुक किसी भी एकेडमी की ले सकते हैं. Go for practicing more and more MCQs. But the thing that will provide you with a lot of information and that will make you memorize all these points is कि जब आप इस सारे कोर्स को और अपने टेक्स्ट बुक के रीडिंग को साथ साथ लेके चल रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास लिटरेरी डिवाइसेस very few past papers I came across these MCQs जहां पे simile, metaphor जो बेसिक जो कि आप ही के कोर्स के पोम्स में
इंक्लूडेड लिटरेरी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी टेक्निक्स हैं, या जिनको फैगरेटिव डिवाइसेस कहा जाता है, वो भी यूजुअली आ जाते हैं। एंड नाउ आपके वोकैबुलरी के कंफ्यूजन को, इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म you will be provided with 15 MCQs, 15 MCQs along with the synonyms and their antonyms respectively. All you need is to go through those words and remember, जब तक आप किसी भी इंग्लिश वर्ड को उसके उर्दू के मीनिंग के साथ याद नहीं करेंगे, तब भी आपको कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई करने में कि which is that, यानी कौन सा वो लफ्ज है जो इस कॉन्टेक्स्ट को स्पेसिफिकली फिट कर रहा है, तब तक आपको मालूम नहीं होता जब तक आप इस वोकैबुलरी के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड बाय रिमेंबरिंग इंग्लिश वर्ड्स विद देयर उर्दू मीनिंग्स. So 15 words along with their Urdu meanings and along with their synonyms and antonyms will be shared with you people, and this is how by the end of this series you will have approximately more than 500 vocabulary words for your MDCAT exam. A proper series will be started for all these course contents. Good luck. Thank you.